جی ہاں بالکل، اس وقت میں موجود ہوں والسل کے مقام پر، اور یہاں جو ہے آج محفل میلاد منعقد کی گئی، اور اس وقت میرے ساتھ جو ہے چند علماء کرام بھی موجود ہیں، کچھ چند شخصیات بھی ہیں۔ آئیے ان کی جانب بڑھتے ہیں اور آج کے دن کی مناسبت کے حوالے سے جانتے ہیں۔ میں ان کا بیان بھی سن رہی تھی، اخوت و بھائی چارے کے حوالے سے بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی تھی، تو میں چاہوں گی کہ اسی کے حوالے سے جو ہے یہ ہمیں بتائیں۔ جی بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دنیا نیوز کی ٹیم کا۔ جی ہاں، آج منہاج القرآن والسل کے اس عظیم الشان سینٹر میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنس تھی، جس پہ ہم نے آج ایک درس یہی سیکھا اور دینے کی کوشش کی کہ ایک مثالی سماج کس طرح مرز وجود میں آ سکتی ہے، اور اس کے لیے ایک بہترین جو رول ماڈل ہے وہ ریاست مدینہ ہے، اور اس کا ایک بڑا بنیادی یونٹ اور ایلیمنٹ جو تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات میں امت کو دیا تھا، جو آپ نے پوری امت مسلمہ کے درمیان ایک رشتہ اخوت برادرہڈ قائم کیا تھا، جس میں سب کو برابر کر کے ایک دوسرے کا درد سانجھا، ایک دوسرے کا غم تکلیف اور محبت تاکہ سانجھی ہو جائے، اور ایک امت مسلمہ کے اندر احساس اجاگر ہو، جس میں سے وہ کہتے چبھے کانٹا جو قابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جواؤں بےتاب ہو جائے۔ آج ضرورت ہے اس امر کی کہ پوری امت مسلمہ اتحاد کی اس لڑی میں پیرو جائے اور ایک دوسرے کی فیلنگز کو سمجھنے کی کوشش کرے، ایک دوسرے کے جذبات کی قدر کرے، چہ جائے کہ ایک دوسرے کے اندر نفرت، کدورت، منافرت، بغض، حسد، کینیا اور قتل و غارت گری، اس کے ظلم کے خاتمے کا صرف ایک ہی وہ علاج ہے جو آقا علیہ السلام نے ڈائگنوز کیا اور امت کو مواخات مدینہ کی صورت میں دے کر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا تھا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آج کے اس دور میں پھر سے امت مسلمہ متحد ہو اور ایک عظیم الشان سماج دنیا کے نقشے پر مرز وجود میں آ سکے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پھر سے مواخات مدینہ کی عملی تصویر بن جائیں۔ بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبیہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. First of all, I would really like to thank to the team and the Idara of Minhaj al-Quran International Center of UK for giving me the chance, the opportunity to be here to have some conversation with the people, the Mu'mineen of Walsall. So basically, it was my first time when I came in contact or came into the program of the Ahl Sunnah Jamaat. I am really very blessed. I'm feeling very overwhelmed, and the program was organized on the munasabat of Wiladat of Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, and here we have shared our knowledge and our opinion, our views and thought. When I have come to see that all the speakers out here who come from the different part of England, irrespective of London, Leicester, and the North Khan and all, so they all have given the same message. The same program was, and this. The same, it was the same platform which when we have shared, and the message which all of us has given, it was really a very beautiful thing that the message was same, and the message was ittihad of Muslim ummah, the unity, that we all the different firqa should be united, and there should be the mu'minin should be in one platform, in one level, and there is no difference between the mu'minin. As lastly Samahat Sheikh has given the lecture when he was sharing one of the Rasuls, one of the hadiths, when he said, Innama mu'minun al-ikhwa, that mu'minin are ikhwan, mu'minin are brother. So we are all a brother, and we will try to be in the same brotherhood till the day of Qiyamah, and we will be inshallah helping each and every one, inshallah ta'ala wal musta'an. Thank you. جی ہاں، آج کی اس تقریب میں جو ہے میرے ساتھ کچھ نوجوان بھی موجود ہیں، اور ان کی جانب بڑھتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہاں منعقد کی گئی، اس کے حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں۔ We had our annual Milad program in MQI Warsaw. We feel it's very important for us to celebrate the Prophet ﷺ's birthday every year, and when we come here we're in a spiritual gathering and we're getting closer to our
beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर साल की तरह तहरीक मिन्हाजुल कुरान वोलसोल आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना जो रिश्ते मवद्दत है उसका इजहार करने के लिए मौलिद के प्रोग्राम पर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर दिया। और जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पर जितने भी मकातब फ़िक्र थे उसके उलमा यहाँ पर मौजूद थे। तो मिन्हाजुल कुरान की पहचान यही है कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बुनियाद पर रिश्ते अख़ुवत को जो है वो कायम किया जाए। तो दैट्स वाई इस शहर के अंदर, इस टाउन के अंदर बसने वाले जो है वो जानते हैं कि जब भी यहाँ पर मौलिदुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम होता है तो चाहे किसी भी मकतबा फ़िक्र से उनका ताल्लुक़ अहले तशय्युअ से, देवबंद मकतबा फ़िक्र से या जो है वो किसी और मकतबा फ़िक्र से हो, वो इस मजलिस के अंदर शिरकत के लिए जो है वो अब बाइस सादत समझते हैं और भरपूर जो है वो शिरकत करते हैं। तो आज जिस तरह माशाल्लाह नात खान ने जो है वो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर मिदत पेश की, नात पेश की, स्कॉलर्स ने बयान किया, तो इसी पर हम जो है उम्मत को लाना चाहते हैं कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर उसको बुनियाद बनाकर हम अख़ुवत का रिश्ता कायम करें। और यही इस जो कॉन्फ्रेंस था उसका मैसेज था। तकरीब में जो है मेरे साथ कुछ ख़वातीन भी मौजूद हैं और इनकी जानिब बढ़ते हैं और इनसे जानते हैं कि ख़वातीन के हवाले से ये क्या कहती हैं। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस जो मुनक़िद हुई उसमें इस वक्त हमारे साथ कुछ ख़वातीन भी मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें हुज़ूर सल्लम का उम्मती पैदा किया। तो जहाँ तक के बात ख़वातीन के हवाले से सीरत नबी में है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद ही औरतों को दर्जा दिया गया। और उससे पहले भी अगर हम देखें तो दुनिया में ख़वातीन का क्या दर्जा था वो तारीख़ में हमें मिलता है। लेकिन जो इज़्ज़त और मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ख़वातीन को दिया उसकी मिसाल हमें ना कभी मिल सकती है और क़यामत तक मिल भी नहीं सकती। तो ये मिलाद कॉन्फ्रेंस का मकसद ही यही है कि हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अपनी ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ पैदा करें और आने वाली जो नस्लें हैं वो एक औरत से चलती हैं तो औरत को ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए उनकी तरबियत इस तरीके से करनी चाहिए ताकि हमारी आने वाली नस्लें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ बसर करें। Assalamu alaikum. So our aim is to get the young youth to enter the masjid to learn about the sunnat of the Prophet, the hadiths, the Quran, the ayahs, everything that is that will help us in the future, help us in the afterlife. Our aim is today we had the Sirat of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and we had a lot of the girls come and help us around, even upstairs, helping giving the food out with the hadiths of the Prophet, listening to the naats, and yeah. जी हाँ, आज की जो तकरीब है सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुनक़िद की गई है वॉल्सल में और इसमें जो है काफ़ी बड़ी तादाद में जो है ख़वातीन भी मौजूद थी, यंगस्टर भी थे, बच्चे भी थे, जवान भी थे और उलमाए कराम जो है उन्होंने सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से क्या कहा वो भी आपने सुना। और जब सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम पहलू जब हम जानेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी जो है उसी के मुताबिक गुजारेंगे तो इसमें खुदा भी खुश होगा। कैमरामैन टीम के साथ फौजिया अंदलीब, वॉल्सल, मिडलैंड।